Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sony, and if you're new to this channel then please consider subscribing as I post videos on makeup, fashion and lifestyle about Canada. And you must have seen me in my previous video that I was in Vancouver. I was in Toronto, sorry, earlier, and now I moved to Vancouver. And so as you see from the title that I'm gonna talk about my very first job in Canada and how I got this, and what the preparation I have done to get this job and all of that. So I'm gonna talk all of that, like what you have to do if you are looking for a job, like your first job here in Canada. It's I like in my previous video I told you that it's not that much difficult, but it is difficult to get your first job because बहुत few कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको आपकी प्रोफाइल आपके डोमेन के अकॉर्डिंग दे जस्ट गिव यू द जॉब. लाइक इफ़ यू आर डूइंग जॉब इन इंडिया, बैक इन इंडिया, जो आपकी डोमेन की जॉब है बट वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी. इट्स नॉट अबाउट कि वो आपको मिलेगी नहीं, इट्स जस्ट दैट कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस है और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. सो मेरे पास इंडिया का आई वॉज वर्किंग एज अ I was a senior associate, but the work I was doing, that was a quality analyst work, which I was doing in my company like earlier when I was in India. But when I moved here, I had to start my career. Like I know I cannot get my domain job here, but I have to start somewhere, right? So what I did, I just looked for the companies. I was contacting consultants here. You get agencies here who hire, like who get companies, like multiple companies and under one roof, and they just contact um, employees or the person who is looking for the job. So what I did, basically I'm gonna start about my job, how I got it, and where I'm working right now, and all of that. So I started looking job in maybe I landed here in Toronto February 16th, and after that, after 15 months, like completing February, I just started looking for the job. And in March I was like very consistent in looking job on every website, on like every agencies, and LinkedIn, Indeed. These were my Glassdoor, ZipRecruiter, which is very famous here in Canada. So I was looking into all of these platforms. Like, so first I was looking in quality analyst or maybe senior associate level, because that was the experience I had, right? So I was looking in my similar domain, but I wasn't getting any response from any recruiter. Whenever I open that page, they're just asking for these skills, like if you want to go for business analyst, project manager, you have to have that uh, high level of skills, but I didn't have that. So what I do in that case, so मैंने क्या किया, I started applying in maybe back-end jobs, in chat support and customer service. So customer service आपको यहाँ पे easily मिल सकती है if you are looking like बहुत ही ज़्यादा हार्डली आप देख रहे हो तो आपको मिल जाएगी. इट्स नॉट अ बिग डील. बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे कि इंडिया में वी आर लाइक वी नेवर फोकस ऑन आवर CVs, ऑन आवर रिज्यूमे, राइट? सो it's like completely new for me, like how to tailor your resume every time you're applying for the job, and that was like a difficult part for me. So I was like, what I'm doing, I have to, if I'm applying for, let's say, company Amazon here, I have to alter my resume according to that Amazon company. But I mean to say that if company is looking for customer service in Amazon, right? Amazon में customer service के लिए देख रही है, तो जो कंपनी की की पॉइंट्स होते हैं वो आपको मेंशन करने. इट्स लाइक सिमिलर, आपको कुछ पॉइंट्स अपने CV में रखने हैं, जिससे कि यहाँ की कनाडा का जो प्लेटफॉर्म होता है, इट्स लाइक अ, आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग और राइट, बट देयर इज़ लाइक अ प्रोसीजर फॉर एवरी कंपनी, जहाँ पे वो कीवर्ड्स को सर्च करके, if you have that keywords in your CV which is matches to the job they have
रिक्वेस्टेड फॉर, अगर वो मैच होता है तो वो आपके सीवी को पिक करता है. इट्स लाइक ऑटोमेटेड सिस्टम इन द कंपनीज. एंड उसी के थ्रू आपको कंपनीज की तरफ से कॉल्स आते हैं लाइक, हे वी हैव सीन योर रिज्यूमे एंड we want to connect with you, we want to have a one-on-one session with you, like interview and all. So that kind of a thing just happened after that, and I started looking for that. तो मैंने क्या किया, मैंने 6 से 7 एजेंसीज़ के नंबर निकाले. Like in my list there was lot of that, Rentcent were there and Aston Carter were there. So and I don't remember one of them also. बट जब मैंने एस्टन कार्टर को कांटेक्ट किया, सो आप अगर गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा, टोरंटो में भी है एंड वैंकूवर में भी एस्टन कार्टर. सो दे जस्ट व्हाट दे डू, दे हैव लॉट ऑफ कंपनीज along the Canada, or maybe I don't know, like for other countries also. So what they do, they just get the information from the company and the position they are hiring for, and they just work for them. Like if you are from India, you know, इंडिया में कंसल्टेंसीज होती हैं जो हायर कराती हैं. सिमिलर गोज़ हेयर इन कैनेडा. हेयर इन कैनेडा आपको बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज मिल जाएंगी, लाइक एजेंसीज मिल जाएंगी जो आपको हायर करवाती हैं फॉर डिफरेंट रोल्स. सो व्हाट आई डिड, मैंने अपना सबसे पहले सीवी मैंने ऑल्टर किया. लाइक आई स्टार्टेड विद कस्टमर सर्विस बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट आई कुड स्टार्ट विद. अदर देन दैट, if I would be looking for like quality analyst or maybe senior associate level, then I would be sitting idle, and I don't want to sit idle. So मैंने अपना CV edit किया, and then I contacted one of the agency which is Aston Carter, ASTON. मैं नाम फ्लैश कर दूँगी if you are looking for the job. तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, एंड उनकी वेबसाइट पे काफ़ी सारी जॉब्स निकली हुई थी. तो मैंने उनको एक्चुअली वॉइस मेल में मेरा मैसेज किया दैट आई एम लुकिंग फॉर द जॉब एंड दिस इज़ माई नंबर एंड आई एम लुकिंग इन दिस पर्टिकुलर field, right? So I left them a voice note, and right now I'm working in Shaw, if you guys are aware of not. जो है कनाडा में, उनको पता होगा obviously, like we have Rogers, Bell and Thales, and there is one Shaw. सो मुझे शो के लिए इंटरव्यू कंडक्ट हुआ. एस्टन कार्टर ने मुझे उनके HR, पहले एस्टन ने मुझसे इंटरव्यू लिया फ़ोन पे, लाइक व्हाट इज़ योर पास्ट एक्सपीरियंस, व्हाट आर यू डूइंग एंड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग देयर. सो ऑल ऑफ दैट, एंड दे वर आस्किंग लाइक what's your status in Canada, so all of that. And then I gave the interview. After that, like after 2 to 3 days, they just said you will be getting the call or the messages from the so उन्होंने क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया मेरी वॉइस को, एंड व्हेन आई वाज गिविंग द इंटरव्यू टू द एजेंसीज, उन्होंने उस वॉइस को रिकॉर्ड किया, एंड देन उन्होंने उसको कंपनी को भेजा, लाइक कंपनी HRs को. सो उन्होंने वो चीज़ सुनी, एंड दे जस्ट दे जस्ट अग्रीड फॉर दैट वी वांट टू इंटरव्यू दिस पर्सन एंड गो फॉर इट. सो फिर कंपनी ने एस्टन कार्टर को कांटेक्ट किया कि ठीक है, आप इसको इंटरव्यू के लिए अलाइन करा दो बच्चे को, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द ईमेल फ्रॉम द कंपनी. एंड मेरा इंटरव्यू हुआ मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ मेंशन करनी है, यहाँ के जो HR हैं, दे आर वेरी कूल. इट्स लाइक कि आपको सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन your verbal skills, like how you are speaking and how differently you are giving the answers every single time. If they are asking you, they don't bother about the mistake. They won't pretend like, oh, we are the HR and we can judge you in a certain way. They won't do that. They just are very friendly with you, and they'll ask like they just want to know about you. What do you think if there is a situation? मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 30 to 45 minutes चला. It was like they have given me the time of 30 minutes, but it just goes almost 45 minutes. So there is like, एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंड एक उसको नोट करता रहता है HR. सो वहाँ पे 2 HR होते हैं, तो एक आपके आंसर्स को सुनेगा, पूछेगा, एंड एक आपके आंसर्स को नोट करेगा, लाइक व्हाट बेस्ट यू आर डूइंग एंड व्हाट
scope you have in future if we hire you. So वो मेरा इंटरव्यू हुआ एंड उसके बाद बस यही था, दे जस्ट आस्क यू अबाउट योर वर्क, अपने काम को एक्सप्लेन करना, आपने क्या क्या किया है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग लाइक, if you are giving the answers, then it should be systematically given. It should not be like you are just pulling one leg and pulling your head. It should not be like that. It should be in a systematic manner that you are giving the answers to the HR. And yeah, so always don't be so like, मैं एक ही एडवाइस दूंगी अपने इंटरव्यू से. Now I can give interview anywhere in the world, whoever is come. I was like, मेरे को बहुत ज़्यादा fear था इंटरव्यूज़ का, because in my entire life I have almost like, मैंने सिर्फ 2 ही बार इंटरव्यू दिया because I had 2 jobs in past. So मेरे को इतना कुछ वो नहीं था, क्योंकि अर्ली स्टेज में आप फ्रेशर होते हो. सो even HR don't ask you a lot of questions if you are fresher, but when you get experience in life like 5 years, maybe 10 years, then you have to explain each and every step of your experience, whatever you have done in your past, like related to work. So they're gonna ask you everything, like what you have done, what was the role that you have played in the past, right? So मेरे पास सिर्फ 2 ही जॉब थी, सो मुझे इतना चांस नहीं मिला इंटरव्यूज़ का. सो यहाँ पर अब मैंने इंटरव्यू दिया, सो नाउ आई नो कि यहाँ पे कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं. एंड यहाँ के HR बहुत चिल होते हैं. आई जस्ट वांट टेल, मैं कोई गलत मैसेज नहीं देना मुझे. आई जस्ट वांट इंडियन HRs टू बी लिटिल बिट कामर व्हेन दे आर टेकिंग इंटरव्यू, बिकॉज इफ़ यू आर हायरिंग अ फ्रेशर नो, आपको तब भी ये सोचना है कि अगर हम किसी फ्रेशर को हायर कर रहे हैं तो वो आप उसको जब तक सिखाओगे नहीं वो सीखेगा नहीं, राइट? सो मेरे को यही बोलना है कि जो इंडिया में हायरिंग होती है ना, उससे पहले ही बच्चे इतने नर्वस हो जाते हैं ना कि मतलब वो बोल ही नहीं पाते. वो उनको पता है दे कैन डू देयर जॉब बेस्ट, बट उनको वो फियर उनके अंदर निकल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो आगे बोल पाएँ, या they want to show their skills, what they have learned in so many years, like in school, college, but उनको वो चांस ही नहीं मिलता because of that fear जो उनको इंटरव्यू के टाइम पे they face. So मेरा सिर्फ यही है कि मुझे जब यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सारा कुछ हो गया, देन उसके 2 दिन बाद मुझे, 2 दिन नहीं, इट्स लाइक 1 डे आफ्टर, मुझे कंपनी की तरफ से मेल आ गया कि you have this employment letter and you have to fill it away, and you have to submit your like legal documents, which are my PR, my passport and my SIN number. SIN number is your bank number जो आपको बैंक से मिलता है once you open your account in bank. So मुझे all of those details has to fill them, and उसके बाद मुझे उन्होंने डेट अलाइन कर दी that you will be joining from 9th of May. सो मेरा 9th of May से ज्वाइनिंग था, एंड इस तरीके से मेरे को जॉब मिली. सो इट्स लाइक कि आई वुड से डिफ़िकल्ट नहीं है कनाडा में जॉब लेना. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, बट अगर आपका स्ट्रैटेजी ठीक है, आप CV करेक्टली बना रहे हो, एंड आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग, अगर आपको कोई जॉब दिख रही है किसी भी साइट के ऊपर लाइक ज़िप, रिक्रूटर, इंडीड या लिंक्डइन पर, तो आप उस जॉब के अकॉर्डिंग अपने CV को ऑल्टर करो. CV को ऑल्टर कैसे कर सकते हो? अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसमें डाल सकते हो दैट आई हैव डिड दिस इन माई पास्ट एक्सपीरियंस एज वेल. मतलब ये काम मैंने किया है उसमें. It should not be like that you are just copying and pasting in your CV. It should be like just edit it by yourself. I know it's a very hard task to edit every time for every particular job, but you have to do it. Once you get your first job, you are free to go. Nobody is asking you, and nobody is just, you have to explain your past experience which you have in Canada, right? After that, so मेरा इस तरीके से मेरी हायरिंग हुई. फिर मेरे इंडिया में जो मेरे कलीग्स थे, मैनेजर्स थे, उनके साथ में उन्होंने कॉल पे कॉन्फ्रेंस किया लाइक इफ़ शी इज़ वर्किंग और नॉट अर्लियर, एंड वो व्हाट वाज द जॉब एंड हाउ वाज ही और शी वाज इन द जॉब. सो वो सब मेरे मैनेजर, HR मैनेजर एंड मेरे
टीम लीडर से पूछा गया। सो इस तरीके से यहाँ पे हायरिंग होती है। एंड व्हाट एल्स, या सो मेरा सिर्फ कहना यही है कि जो भी यहाँ पे जॉब देख रहे हैं, यहाँ पे जॉब्स की कमी नहीं है। यू विल गेट मल्टीपल जॉब्स हेयर इन टोरंटो और इन वैंकूवर, बट यू नीड टू गेट द राइट अप्रोच टू गेट दैट जॉब। एंड या आपको अपने सीवी के ऊपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका सीवी, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट विच विल गो इन टू द सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। एंड जिससे कि कंपनीज उसको फ़िल्टर करेंगी। अगर आपके कीवर्ड्स मैच हो गए देन इट्स गुड, अगर नहीं मैच होते दैट दे वोंट प्रेफर टू गो विद योर सीवी। सो पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट द कंपनी, लाइक कंपनी के वो आपको जज नहीं करेंगे, बट यू शुड नो दीज आर द बेसिक एथिक्स दैट वी शुड नो। If you are applying for Amazon or maybe Roger or maybe Shaw, you should know about the company, like what they are doing, what their services are, right? So yeah, मेरे को बस यही बोलना है कि इस तरीके से मेरे को मेरी पहली जॉब मिली एंड आई गॉट, एंड आई एम वेरी वेरी लकी, टच वुड, दैट आई गॉट माई जॉब. आई थिंक I landed in February, right? March, April, May. So I got my job in 2 months. Yeah, I tried for 2 months and it's like here and there मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे कोई स्टार्ट अच्छा मिल जाए. So yeah, मुझे वो मिल गया and I'm very lucky that I got this job. And what else I want to tell you? And यहाँ के HRs बहुत chill होते हैं, so please don't feel panic. And those who are coming alone, यहाँ पे जो अकेले आ रहे हैं, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो यार. यू हैव पार्ट टाइम जॉब्स इन वॉलमार्ट, टिमीज लाइक टिम हॉर्टन्स, मैकडी. देर आर मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी. इट्स अ बिगनर लाइक at the beginning, but if you are coming for, like, if you are coming on PR or maybe on work permit at the end you will get the job from the company, right? But those who are coming on PR, they can also get the job here. There is no hard and fast rule that you won't be getting the job, but I know that you will get the job, but that would be not your domain that you are doing in your home country, but you have to start your career, right? So yeah, I think that is the best tip that I could give here, कि अपने CV को edit करना हर किसी job के लिए, which is very important. And अपने आंसर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करना that they are listening you, and don't be sit like सीरियस होके बिल्कुल मत बैठना. They are very chill, हंसी मजाक अच्छे से आंसर करना. Because my HR was so good, because she was complimenting me and she was laughing with me. So that's how you create that atmosphere when you are giving the interview. If I'm sitting like this, yes, this doesn't work for the newcomers who are coming to give the interview, right? They will be scared by your face, by your gestures and everything. So you have to be like, इंडिया में जो, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बट इंडिया में एक्चुअल में बच्चे HRs को देख के डर जाते हैं. सो आई थिंक दैट शुड बी चेंज्ड. HR should be more relaxed, and especially with fresher, they have to that that capacity that they can understand the person better if they'll give some time to them. एंड उससे क्या होगा कि वो फ्रेशर है, उसको कुछ नहीं पता. सो वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि वो कितना हेल्पफुल रहेगा कंपनी के लिए, व्हाट बेस्ट ही और शी कैन डू फॉर द कंपनी. सो आप अगर उसको एज अ फ्रेशर कह के उसको रिजेक्ट कर दो तो वो यहाँ पर भी नहीं होता. बिकॉज आप अगर किसी मैकडी में काम करने जाओगे, वॉलमार्ट में काम करने जाओगे, दे वोंट सी योर पास्ट एक्सपीरियंस. They just want the work should be done, कि काम आप कर रहे हो, टाइमली कर रहे हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एंड यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि इफ़ यू हैव लाइक, यहाँ का जो वर्क कल्चर है ना, विच इज़ लाइक ऑसम. मतलब मैं
अच्छी चीज़ों के बारे में भी बात करूँगी इन फ्यूचर में, और मैं आपको बैड पॉइंट्स भी बताऊँगी कि क्या क्या आप फेस कर सकते हो इफ़ यू आर कमिंग अलोन यहाँ पे। बट एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि अगर आपका काम लाइक 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट है तो 8 आवर्स पर ही ख़त्म होगी. They won't ask you to do extra work after your shift. No, no, no. That's completely no. They won't ask you for that. If they're asking you for that, they have to pay you for that particular hours that you're working. So that is the best part. So yeah, I think that is pretty much it I wanted to share with you. So I have a job now and I'm working with Shaw, and yeah, it's a very good company, and I'm happy that I got this job. So I'm gonna see you in my next video. If you have any questions, please let me know in the comment section. I'm gonna answer them. And if you want to see anything else apart from this, then do let me know. So yeah, I'm gonna see you. Bye in my next video. Till then, take care.